all of you, and here is a great misconception which came during my teaching experience of calculus. And the question is, let's say if f dash 0 is greater than 0, so can we tell f is increasing in a very close proximity of 0? तो अगर कोई भी पॉइंट पे डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उसके वेरी आसपास, अगर हम बहुत छोटा सा इंटरवल है, सपोज 0 के आसपास माइनस डेल्टा और डेल्टा, तो इस इंटरवल में भी वो फंक्शन इंक्रीजिंग ही होगा. ये misconception is generally coming because of the fact, like let's say at x equals 0, its slope is positive. Let's say f dash 0 equals half. So with feel, we'll get graph something like this. Okay. तो अगर ऐसा ग्राफ होगा तो ऐसा लग रहा है जो yes, I can always take an interval very close nearby 0 minus delta delta, जहाँ पे if x increases, y increases. Okay. But this is a wrong conclusion out of this. And let me give you an example of this. Before I give you an example, you can fairly guess प्रॉब्लम कहाँ आ सकता है. देखो प्रॉब्लम ऐसा आ सकता है, हो सकता है फंक्शन 0 पे तो डिफरेंशिएबल हो, लेकिन उसके विसिनिटी में ये बहुत ही खतरनाक डांस चल रहा हो. The function is like behaving in a very crazy way near about 0. तो ऐसा possibilities है. To give you a specific example, consider a function f of x given by x by 2 plus x square sin pi x. Now clearly this function is not defined at x equal to 0. तो इसको हम forcefully define करते हैं. तो हम ऐसे function को define करेंगे. Let's say fx is this for x not equal to 0. और इसको मैं 0 बना देता हूँ at x equal to 0. So this is a piecewise defined function as of now. अब इस function का graph if I try to draw, it's not very difficult. Because we know sin pi by x will be anyway lying between -1 to +1. So hence this term will lie between minus x square to plus x square. Hence overall function for x not equal to 0 will lie between x by 2 minus x square to x by 2 plus x square roughly. तो x by 2 plus x square का ग्राफ लगभग कुछ ऐसा दिखेगा, एंड x by 2 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो दिखेगा वो आपको अप्रॉक्सीमेटली कुछ ऐसा दिखने वाला है. ठीक है, ये दोनों क्वाड्रेटिक फंक्शन है. एंड नाउ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज डेफिनेटली सैंडविच बिटवीन दीज टू. तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा. इट विल बी ऑसिलेटिंग. दैट ऑसिलेशन इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ द साइन एक्स बिहेवियर दैट विल ट्राई टू डांस, और ये वेव जैसा दिखने वाला है. Now you can clearly see this is very crazy graph, क्योंकि यहाँ पे जो वेव होने वाला वो बहुत ही खतरनाक होगा. खतरनाक इसलिए होगा क्योंकि when x is let's say very close to 0, let's say the value of x is 0.00001 2 3 4 5 9 ऐसा, तो this is going to infinity, right? Because sin infinity. Now sin infinity will dance from plus minus 1 anything, because if you see the graph of sin x at infinity we don't actually know, so it will dance like randomly at random between -1 to 1. तो ये क्वांटिटी बहुत ही खतरनाक तौर से माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर डांस करने लगेगा. सो इट डजंट नो, लाइक विद इन नो सेकेंड इट विल ट्राई टू टच द अपर कर्व, एंड इमीडिएटली इन द नेक्स्ट नैनो सेकेंड एंड लेस देन दैट इट विल ट्राई टू टच द लोअर कर्व. तो अगर मैं इस पोर्शन को यहाँ से निकालूँ एंड इफ आई ट्राई टू जूम इन, सो बेसिकली हाउ इट विल लुक लाइक वेरी क्रेजीली dancing curve. Now why I am making a smooth at exactly x equal to 0? So let's see. Now if I want to check its continuity, clearly this function is continuous at x equal to 0. Why? Because at x equal to 0 this limiting value will give 0 by 2, and x square is 0 into sine of something pi by tending to 0. Now sine of infinity will be a dancing limit from -1 to 1, and since 0 into any finite dance will still be 0, and x equal to 0 पे 0. So since limit x tends to 0, f of x और f of 0 का वैल्यू मैच कर गया, तो फंक्शन तो कंटिन्यूस है. नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0, अब यहाँ पे यू कांट डिफरेंशिएट दिस एंड देन रिपोर्ट द डेरिवेटिव. द रीजन बिंग, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन के लिए फंडामेंटली वी वांट f of 0 प्लस h माइनस f of 0 बाई h एंड लिमिट h टेंस टू 0. It will take care of both right hand and left hand derivative because h can be 0 plus or 0 minus. Now if directly you differentiate and then argue, like the method of
डिफरेंशिएशन यूजुअली विच मेनी स्टूडेंट्स अगेन हैव मिसकंसेप्शन, तो वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वो इस इंफॉर्मेशन को कैप्चर करेगा ही नहीं कि f0 पे क्या स्टोरी चल रहा है, क्योंकि मे बी आई कैन डिफाइन द फंक्शन at f0 as 10 or 100. Okay, so that information must flow in the derivative of the function. ठीक है, exact 0 पे क्या है. Under this situation, since f0 is 0 and f of h is nothing but h by 2 plus h square sine pi by h over h. Limit h tends to 0, and if we simplify, you'll get half plus h sine pi by h. Now sum of limit is limit of sum क्योंकि एक finite है, तो दिस क्वांटिटी विल गो टू 0 बिकॉज 0 इंटू अगेन समथिंग द आंसर बिटवीन -1 to +1, तो ओवरऑल 0 इंटू फाइनाइट इज 0, सो हेंस f dash 0 इज हाफ. नाउ दैट इज समथिंग रियली क्रेजी क्योंकि यहाँ से व्हाट वी आर गेटिंग 0 पे एग्जैक्टली स्लोप हाफ है. ओके, लेकिन कैन यू कमेंट अबाउट what is happening just after 0? So let's try to now find the value of f dash, maybe 0.00000000, keep on chanting and on. Okay, now if this is also very close to half, then maybe I'm tempted to tell like, okay, nearby 0 the function is still showing that increasing behavior. Lekin okay, so let's give a try. The best thing we can do is we can now differentiate the function f dash x at x not equal to 0. Then I'm allowed, because when x is not equal to 0, then function behavior is this. And if we'll differentiate, what we are getting is half minus pi cos pi by x plus 2x sine pi by x. And now if I take a value, let's say x very tending to 0, very close to 0, whether it's 0 plus or 0 minus, then this quantity will again go to cos infinity times pi, and this is 0 times something finite dancing, so it's fine, this will die. But the problem is we got half minus pi cos infinite. Now cos infinity will dance from -1 to 1, so basically this quantity is not a fixed value, right? It's dancing from half plus pi, or it can take half minus pi, or any value between this. So f dash 0 plus doesn't exist, right? Doesn't exist in the sense like it behaves very badly. Okay, so if I take any value of derivative just after 0, no matter how small this interval of minus delta to plus delta you give, just at 0 you have a nicer value, half. Just after, okay, you don't know what crazy thing is happening. So in that sense, we can't conclude the function is, like strictly increasing nearby the interval, no matter how close is your proximity. अब इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि सपोज मैं x को बहुत छोटा रखा, and to get a feel of the situation, maybe I can take, let's say x is 1 by k, where k is integer. Okay, and moreover, let's say positive integer. As suppose if I take x equals 1 by 5, other time 1 by maybe 10,000. Okay, और ऐसे करके रखा, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये pi by 1 by 10,000 will give you 10,000 pi, तो वहाँ पे तो this value will go to just pi, right? और ये तो anyway 0 होने वाला है, because sin of n pi will be 0. So if I take 1 by n, then the value of f dash 1 by n at any value of n, okay, which is a positive integer or negative integer, what we are getting is half minus pi cos n pi and plus 2 by n sin n pi. Now sin n pi will always be 0 as long as n is integer. cos n pi क्या होगा, ये प्लस माइनस 1 होगा. अब प्रॉब्लम क्या है, अब ये तो डिपेंड कर रहा है हम 0 के आसपास, whether I am going by an odd number or an even number, like odd fraction or an even fraction. ऐसे मैं 1 by 10 to the power 10,000 लिखते ही चले जाऊँ, तो फिर आंसर ये अप्रोच कर जाएगा, ठीक है ना, हाफ प्लस पाई को. अगर मैं ये ऑड से जाऊँ, लेट्स से 1 by 3 करके और 1 by 9 करते चले जाऊँ, तो फिर ये इवन से चले जाएगा. तो फिर यहाँ पे भी सेम चक्कर आ रहा है कि मैं जब 0 के पास ऑड वैल्यू से जा रहा हूँ, अब मैं हाउ क्लोज आई कैन गो टू 0, इसका कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि मैं n को जो मर्जी वो बढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना. मैक्सिमम आप n को 9 लेके चलते रहो या फिर 10 करते रहो, ठीक है. सो इन दैट सेंस ऑल्सो ऑल द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज क्वाइट क्लियर एट x इक्वल टू 0, बट प्रॉक्सिमिटी के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ही गंदे तरीके से द फंक्शन इज बिहेविंग इन अ वेरी बैड वे. So all the function is behaving bad way, but it's quite a good function for our investigation. Okay, so thanks to this function, and I hope this has erased your misconception. Okay, I'll come with more particular topic. This is a topic which is fundamentally known as theoretical calculus. और आजकल recent fashion है, आप अगर
लास्ट 2-3 years के जे एडवांस के पेपर्स देखोगे, so there are some problems on theoretical calculus as well. So I thought this would be a good lecture.